this is Nadia Hussain and welcome once again, and of course one of the most favorite topics which is about makeup. आज जो है वो मैं आप लोगों को फाउंडेशन के बारे में बताऊंगी and I'm going to talk only about contouring, but there is a twist कि मेरे पास जो है वो क्योंकि मेरी वैनिटी जो थी वो मैं एक अपने क्लाइंट के लिए मैं ले गई थी to the salon and I forgot to actually bring my brushes, so I'm at home और मेरे brushes नहीं हैं. So we are going to actually take a twist on it and do contouring without a brush. So let's get started with the foundation. So let's start. Of course, I do have my little beauty blender, and so let's start with the color corrector. The color corrector that I'm actually working on is color correction. एक ऐसी चीज़ होती है कि जो for example अगर आपके dark circles हैं तो डार्क सर्कल जो हैं वो आपके होते हैं लाइक जनरली ब्लूइश टिंज उसमें आ रही होती है या ब्राउन की टोन्स उसमें आ रही होती है. वो जो आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं और जो आपके कहीं डार्क स्पॉट्स होते हैं वो आपको कंसील करना होता है विथ जो कलर करेक्शन जिसको बोलते हैं. द कलर करेक्टर दैट आई एम वर्किंग ऑन नाउ इज दिस काइंड ऑफ अ स्लाइटली येलोवी ऑरेंजी काइंड ऑफ अ कलर विच आई एम गोइंग टू अप्लाई राइट नाउ. यू कैन सी कि दिस इज अ स्लाइटली ऑरेंजी काइंड ऑफ अ कलर जो कि आपकी ब्लू टोन को जो है जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो उसमें ब्लूइश टिंज आ रही होती है. ठीक है, तो उसको जो है वो कलर को न्यूट्रलाइज करता है, उसकी जो ब्लूइश टिंज को जो है वो कम करेगा. तो ब्लूइश टिंज को जो है वो वाइट या कोई ऐसा कलर नहीं उसको कम करेगा. आपको इसका जो ऑपोजिट कलर होता है जिसको कलर व्हील जिसको बोलते हैं, अगर आप ऑरेंज देखेंगे तो उसके ऑपोजिट ब्लू होता है, तो ब्लू के ऑपोजिट ऑरेंज होता है. सो वो आपको अपोजिंग कलर्स जो हैं वो लगाने होते हैं. तो हमारे अंडर आई पे अगर ब्लू टिंज आ रही होती है तो आपको अपोजिंग कलर उसका like a orangey yellow kind of a color आपको लगाना होता है. So this is the color corrector that I am working on, which has got this orangey kind of a tone in it. So here is the color corrector, okay, जो मैं अपने पूरे all around my आईज जो डार्क सर्कल का एरिया है उस पे लगा रही हूँ. एंड देन आई एम वर्किंग ऑन फाउंडेशन एज वेल. तो अभी जो है मैं आप लोगों को पैकेजिंग वगैरह नहीं दिखा सकती हूँ, बट दिस इज़ माई ओन फाउंडेशन दैट आई हैव टेकन and you can really build up the foundation. I have applied just one tiny dot which I'll actually show you. So this was the dot size that I used. This is the second dot actually because पहली dot मैं आपको दिखाना भूल गई. So here I am building out the foundation and giving slightly more coverage so that I can show you कि ये किस तरीके से जो है ये फाउंडेशन ब्लेंड होता है. ठीक है, ओके. नाउ दैट माई फाउंडेशन इज़ ब्लेंडेड, मैं जो हूँ वो इसके नीचे जो है वो अपने फाउंडेशन की रेंज में से जो है वो मैं इसके नीचे अब कंसीलर जो है वो लगाऊंगी. Okay, so I am going to apply the concealer. So the difference between a color corrector and a concealer is कि जो color corrector होता है वो आपकी जो pigmentation की जो tones होती हैं उसके opposite color होता है, तो वो आपकी जो tones होती हैं उसको cancel out करता है. मैंने कलर करेक्टर जो है वो भी लगाया था और अब जो है वो मैंने स्लाइटली डार्कर कलर का जो है वो कंसीलर किया था. ओके, इफ यू वांट यू कैन आल्सो गो फॉर अ लाइटर कंसीलर. सो फाउंडेशन में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड फाउंडेशन आपको बिल्ड करना पड़ता है. ठीक है, यू हैव टू बिल्ड अप ऑन द फाउंडेशन. सो इफ़ यू are even like of course your skin has to be वैसे तो आपकी स्किन बहुत अगर आपकी स्किन अच्छी क्वालिटी की है यू नीड लेस फाउंडेशन, बट इफ़ योर स्किन इज़ नॉट एग्जैक्टली एब्सोल्युटली परफेक्ट, अगर उसके ऊपर कहीं पिगमेंटेशन के स्पॉट्स आ रहे हैं, एक्नी स्कार्स हैं, एक्नी के मार्क्स हैं, पिंपल्स हैं, तो आपको फाउंडेशन जो है वो आपको बिल्ड करना पड़ता है. ओके, सो मैंने भी जो है वो अभी शुरुआत की थी विद द कलर करेक्टर. देन आई वेंट अहेड एंड आई पुट माई फाउंडेशन. देन आई पुट अ कंसीलर, नॉट वेरी लाइट कलर्ड कंसीलर बिकॉज आई डिडंट वांट कि ऑल ऑफ सडन जो है वो जो मेरा ऑरेंज कलर करेक्टर है वो बिल्कुल एक अलग रंग का बन जाए. नाउ इफ आई वांट टू इवन ब्राइटन माई कंसीलर इवन मोर, देन आई एम यूजिंग अ स्लाइटली लाइटर tone of the concealer, and which I'm going to go ahead and I'm going to put an even lighter tone.
ओके सो आई एम डन विथ माई फाउंडेशन। अब जो है वो मैं अपने फेस को जो है वो पाउडर करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, बट आई एम एक्चुअली गोइंग टू अप्लाई द कॉम्पैक्ट पाउडर विच आई एम गोइंग टू पुट अंडर माई आईज। अंडर आई में जो है वो आपको जस्ट सो दैट योर अंडर आई इज गोइंग टू रिमेन एब्सोल्युटली क्रीसलेस, आपको जो है बहुत ज़रूरी है कि जब आप अंडर आई का कंसीलर करते हैं, आपको जो है वो कंसीलर जो है वो आपको blend it out till the last minute so that there are absolutely no creases. Okay, you have to make sure that you really blend it out till there are no creases. Keep your powder ready. Okay, keep your powder ready and instantly go ahead and set it right then and there. Okay, जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी क्रीज जो है वो क्रीज के बगैर जो है वो आपका फाउंडेशन वहीं पे ही सेट हो जाता है। ओके, दिस इज लाइक काइंड ऑफ लाइक अ बेकिंग टेक्निक। ओके, and up second eye I'm just going in with my beauty blender, making sure there are no creases. Okay, I'm stretching out my under eye so that there are no creases, and then I'm instantly going ahead with the powder. I'm actually using a slightly lighter colored powder ताकि मेरी जो under eye है वो थोड़ी सी brighten हो जाए। And over my face, again, this is a product that I'm working on for my own cosmetics range, which is the loose powder that I'm working on. ये जो loose powder है, I'm taking it on a sponge and I'm just dabbing it all over. Okay. सो माई अंडर आई कंसीलर, इसके ऊपर मैंने अभी बेकिंग का जो पाउडर है कॉम्पैक्ट पाउडर वो भी लगाया हुआ है। आई हैव जस्ट डैब्ड ऑन द लूज पाउडर। आइडियली इसको जो है वो ब्रश के साथ उसको थोड़ा सा वाइप ऑफ करना है, बट लाइक आई सेड आई डोंट हैव माई ब्रश टुडे, सो आई एम गोइंग टू वेट फॉर अ व्हाइल। द बेस्ट थिंग अबाउट about having your makeup become absolutely flawless is that you have to wait a while कि द मेकअप जो है वो आपकी स्किन के साथ जब उसका रिएक्शन होता है, जब वो आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड इन होता है, ओनली देन इज द मेकअप गोइंग टू लुक एंड फील एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। तो अगर जो है वो बहुत टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं टू स्टार्ट विद द आई मेकअप फर्स्ट एंड देन गो ऑन विद द फाउंडेशन, बट आई एक्चुअली प्रेफर विद द फाउंडेशन सो दैट इन द मीन टाइम व्हाइल आई एम डूइंग माई आई मेकअप द फाउंडेशन बिकम एब्सोल्युटली फ्लॉलेस ऑन माई स्किन एंड ब्लेंड इन वेरी प्रॉपरली विद माई स्किन। एंड अगर फॉल आउट हो रहा होता है तो फॉल आउट के लिए जो है वो ऑफ कोर्स आप जो है वो लूज पाउडर लेके जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो उसको एक्सेस तरीके से इस तरीके से जो है वो आप डैब कर सकते हैं ऑन योर अंडर आई, so that your any fallout of the eyeshadow जो अमूमन होता है ख़ास तौर पे if you're using a dark color like a black or a grey or any kind of a color of an eyeshadow which is going to have fallout, तो उसमें जो है वो आपका fallout जो है वो eyeshadow का यहाँ पे collect हो जाता है, which you can easily dust off later on. Okay, so let me dust off this powder right now. It will be looking a bit whiter than usual because I need to wait for a while for the foundation to blend in and for my skin oils to actually come out and blend in the foundation. And like I said, I also don't have my brush today, but let's go in with the contouring. This time मैंने शुरू में कहा था कि we will do a twist on the makeup and we are actually going to do the contouring without any brush because I don't have my brushes today. So I'm again over here using one of my favorite contour kits, which is the Christine contour kit. ये है number this was the number 3 kit. Yes, this is the number 3 kit that I'm using. And इसके अंदर जो है वो dark and light जो है वो foundation contour के colors हैं. So I'm going to stick with the lighter color. So I'm going to go ahead with my finger and I'm going to like take a little bit on my finger. And so the contour area has to be right underneath your cheekbone. Okay, so अगर ये आपकी cheekbone है, ये अगर आपकी cheekbone है, so your contour has to be right underneath your cheekbone. Okay, so we can go ahead with our finger and lightly apply the contour color. And you need to smile a little bit ताकि आपकी जो contour line है वो आपकी cheekbone and जो cheeks हैं, जो आपकी ये apples of the cheeks होती हैं, उसके नीचे जो है वो अगर contour हल्का सा आ रहा होता है, it really makes the apples of the cheeks, like in a youthful face, जो आपकी apples of the cheeks होती हैं वो आपकी prominent होती हैं. Okay, so like if you're going to contour right underneath the apples of your cheeks, that way the this area becomes really prominent. Okay. So you can see, I'm sure, from this side to this side. यहाँ पे जो है क्योंकि contouring नहीं हुई है, even though कि मैंने इस area को बहुत highlight किया हुआ है, but on this side, I'm sure you can see that this area becomes quite visibly prominent. So that's the magic of contouring.
So here I have done the contouring. Of course, ideally I need to be dusting this off with a powder, with a brush, my under eye, ताकि ये कि वो बिल्कुल जो है वो extra excess powder जो है वो हट जाए वहाँ से. But I also don't want to over powder because फिर वो और ज़्यादा cakey होने शुरू हो जाता है. Okay, so this was basically just you know, like a quick thing on foundation and contour. Of course, I'm not saying that you can do your entire makeup without brushes, but we can do a little bit of contouring with just your finger. And I'm going to let the oils, you know, like soak up, you know, my foundation so that it is going to become absolutely seamless with my skin. So till I wait for that, you know, I'll catch you guys next time then.